Hello, hello. Okay, so let's begin. Karur Vyasa Bank. This is from Dharun. Okay, so Karur Vyasa is making a nice setup. EMA bounce आया हुआ है इसमें already. And if we see 2-3 वीक पहले ब्रेकआउट आया नहीं था अभी तक ढंग का एक्चुअल ब्रेकआउट अभी ही आया है. These are all red candles. और हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क कर लेते हैं अगर हम ये. His query is for he's holding at 123. So it's almost at double. And the stock is at a fresh breakout very soon. So Dharunji, you should book part in this stock. You are holding it at from a very good level, 123. So almost from here, from this breakout. Since June 2023, you are holding. Part booking would be a good idea. Part booking kar lijiye and above 245, you can see a fresh run. Next stock is Pfizer. Okay, Pfizer is at a resistance zone. The query is for hold or sell. Same thing, you should definitely do part booking in Pfizer. It is at a major resistance zone and इसके बाद भी और resistances ही हैं. This whole area is going to be a resistance. And then this also. So अब सिर्फ resistance ही resistance है पूरा area. Fresh breakout is above 6455. So you should definitely do part booking there in Pfizer. Davis, Davis Lab is in fresh breakout. You should hold this. Retest retest level is 6276. It can come to 6276 and then go back up like this. And you should hold this. You're holding from 3200. So obviously you're going to hold it. अभी तक बुक नहीं किया तो आप बुक नहीं करोगे इसके लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं आपके. This is a fresh flag breakout. Hold for double from here. Easy 3 to 4,000 points in Davis. Just have to give it time. Next is DRC Systems from Vaibhav. DRC Systems, I'm not priced 15 rupees. Okay, so it's still above your cost, but नीचे की तरफ जा रहा है ये. So your stop loss should be 17.4 or maximum this 16.16 लेके चल लो आप. 16, if it goes below 16, you should exit. If it bounces back from here, then you can hold. 17.4 to 16 is the support level. Asian Paint. Hmm. Asian Paints is not looking good. It's not sustaining or either it is going to go sideways like this and then go up. And if it breaks down, then it is more negative. So the levels are something like this. This zone is your support zone. Asian Paints 2124.
to 2242 is the support zone. Below 2124 is a stop loss. You should exit. Below 2120 लगा लीजिए आप. 2120 का स्टॉप लॉस होना चाहिए. This should be your stop loss. This was from Jigar. I'm not sure if he's wanting to buy or sell. Don't buy here. Let it make a W like this and buy above EMA levels. 27 क्रॉस करने देना कम से कम. 27 क्रॉस करने के बाद ऊपर लेना है यहाँ पे 24-25 के आसपास. अगर सेल करना है तो योर स्टॉप लॉस शुड बी 2120. एशियन पेंट्स के बाद पक्का लिमिटेड. पक्का लिमिटेड इज एट अ रेंज बना रहा है. ये बॉटम वाली ये रेंज है. दिस इज द बॉक्स. इसके ऊपर जब निकलेगा देन यू कैन बाय. इज इट फॉर बाय प्राइस 321. 321 यहाँ पे शुड हैव टेकन स्टॉप लॉस इन दिस. बहुत ही नीचे आ चुका है. सो Vaibhav, you should what you should do is you should do an average here in this zone. Do a nice average. If it breaks out, then अच्छा खासा मूव आ सकता है. होल्ड करना. अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, that is below 156, then you should exit full position. Next is Plaza Cable 102. It is now at 60 rupees. So somewhere here you bought it. It is about to give an all EMA breakout above 72 or so. सो जब ये ब्रेकआउट करेगा ना तो एक बार ये एवरेज करना. आई एम नॉट रियली इन फेवर ऑफ होल्डिंग स्टॉक्स विद 50% लॉस. कोई पॉइंट नहीं होता इतना ज़्यादा लॉस होल्ड करने का बिकॉज नाउ यू नीड बेसिकली 100% रन फ्रॉम हेयर. 61 रुपीज का है ये. 100% भागेगा तो 120 होगा तब जाके आपकी कॉस्ट पे आएगा ये. 120 यू हैव बॉट लाइक यहाँ पे खरीदा है आपने एकदम टॉप पे इस कैंडल के यहाँ. तो जब कैंडल नीचे आ गई थी तो वहीं उसी टाइम बंद कर सकते थे. एनीवेज तो यहाँ पे आपको एक बार एवरेज करना पड़ेगा ये स्टॉक. इसका रन आएगा अप्रोक्सीमेटली मोस्टली 72 के बाद. बट एक ये जोन भी है. वंस इट क्लोजेस अबव 65 तो एक थोड़ा सा मूव झटका मारना चाहिए इसको 71 तक. 71 72 ब्रेक करने में टाइम लगेगा. वंस इट डज दैट तब धीरे धीरे ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं. नहीं तो नहीं बनते. बिलो 47 मतलब बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा इसमें. बचा ही क्या है. 120 का लिया था और 47 के नीचे अगर बेचेंगे तो दैट इज लाइक 60-70% लॉस. ऐसे नहीं होल्ड करते हैं सर. डिफ्यूजन इंजीनियर. ओके डिफ्यूजन इंजीनियर 300 बाय प्राइस. यू आर इन पॉजिटिव. चलो गुड. होल्ड और सेल ये यू कैन होल्ड इट. ऑल ये दिस इज एन ऑल ये में ब्रेकआउट अच्छा मूव आएगा इसमें. इसको इजी होल्ड बनता है इसका. नो नॉट एन इशू. 374 तक आराम से जाएगा ये. वो ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर मूव बन सकता है. 374 इज एन इजी मूव फ्रॉम here. स्मॉल रेजिस्टेंस एट 350 एंड 374 सेकेंड रेजिस्टेंस. उसके बाद अच्छा मूव आ सकता है.
So Pakka Limited, you should average and hold. Plaza Cables, you should average and hold for 72 plus. After 72 plus, you can average. Till 72 plus, let it be. And diffusion engineers, you can hold. Sid is asking about Shakti pumps. Shakti pump. His entry is 800. Very decent profit and amazing setup. बहुत perfect all EMA breakout है ये. Sid, hold this. You will make good money in this. कोई इशू नहीं है इसको होल्ड करने के लिए. या अगर स्टॉप लॉस रखना ही है तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दो 800 पे एंड होल्ड इट. Otherwise, you can simply just let it be. It will give you good money. शक्ति पंप हो गया. जुबिलेंट फूड्स. जुबिलेंट फूड्स इज नाइस. गुड सेटअप. नो नॉट कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें. 680 पे यू हैव एंटर्ड. होल्ड इट. अच्छा मूव आएगा इसमें इवेंचुअली. सब सेटअप्स के ऊपर है ये. वंस दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स ये ऊपर जाना चाहिए. 720, 760 एंड 796. मेन रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे है. अप्रोक्सीमेटली 770 के आसपास अटकेगा ये. तो यू कैन होल्ड इट फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 770 अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज ट्रेंड लाइन है ना. तो कहाँ पे, यहाँ पे आके करेगा तो 770 है. यहाँ पे करेगा तो 780 है. सो दिस 770 टू 780 जोन इज योर इमीडिएट टारगेट. और ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा मूव बनेगा. हिंद कॉपर. हिंद कॉपर हमने अंश फ्राइडे को खरीदा है. आपने भी खरीदा है. और फ्राइडे कल था. और कल ही मैं एंटर हुआ हूँ. सो आई डोंट नो उसके बारे में क्या पूछना है. हिंद कॉपर इज एन ऑल में ब्रेकआउट. एक रेजिस्टेंस जोन है ये सामने. इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा मूव करेगा. दैट इज ऑल आई हैव टू से. इसका स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पे आएगा 230 के आसपास. वे 10 EMA इज बॉटम EMA बैंड लेवल. भारत फोर्ज. भारत फोर्ज अमृतसर बहुत अच्छा सेटअप है. ऑल में ब्रेकआउट हुआ था 2-3 हफ्ते पहले. एंड उसके बाद वहीं पे 2 हफ्ते सस्टेन किया एंड थर्ड वीक में इट हैज गिवन अ फ्रेश रन. और अब ये चलना शुरू करेगा तो इट विल गो लाइक दिस. सो होल्ड दिस नाइसली. कोई इशू नहीं है. एक ही इसमें वो है यहाँ पे. जो प्रीवियस से प्रीवियस हाई था दैट इज 1330. अबव 1330 इट वुड गेट गुड मोमेंटम. तो ये एक रेजिस्टेंस ये है बस. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना. अगर 1330 से रिवर्स होने लग जाए तो यू नो व्हाट टू डू. जिंदल ड्रिलिंग. हाँ, so Bharat Forge basically hold for now. Hold for 1330. If you are in very good profits, then you can also do part booking there. But if you see weekly candle is closing above 1330, then just hold. Jindal Drilling. Okay, so this is showing some weakness. All EMA breakout की कोशिश कर रहा था, but all EMA breakdown हो गया इसका. It is even below 100 weekly EMA. So strength is, it is losing strength basically. इसका जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है 522 के आसपास. सो अनदर 100 पॉइंट्स डाउन विच इज नॉट अ कंफर्टेबल स्टॉप लॉस. काफी दूर हो जाएगा. हम्म. तो 522 इज अ लॉजिकल स्टॉप लॉस. तो पिछले लोज हैं और उसके पहले यहाँ पे है एक अप्रोक्सीमेट वाले लेवल्स हैं. ये 578 के आसपास. सो एक्सपेक्ट समथिंग लाइक अ डब्ल्यू फ्रॉम हेयर. अगर नहीं बन रहा है और ये ब्रेक करना शुरू करता है तो इट वुड बी बेटर टू एग्जिट. मीडियम टू लॉन्ग टर्म इज फाइन. बट अगर आपको बेरिश सेटअप दिख रहा है और दिख रहा है कि वो नीचे जा रहा है, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक एन एग्जिट नाउ एंड व्हेन इट रिवर्सेस एंटर अगेन.
I understand कि you are medium to long term in this stock, but the overall pattern is looking weaker and weaker. See how many times it has tested this level. It is going on testing this again and again. ये अगर if it breaks, then the fall is till 349. So बड़ा move बन जाता है. Next support is straight away at 350. और वो भी कोई बहुत अच्छा, it is not a very strong support either. So be a little careful if it breaks 578. Okay, intraday strategies डिस्कस करना, मेरे को थोड़े एग्जांपल्स निकालने पड़ेंगे. सो लेट्स सी, पहले मैं ये खत्म कर लेता हूँ एंड कैसे करता हूँ मैं. आई ट्राई टू गिव सम एग्जांपल्स. Ram is asking about Tejas. The average is 1143. Okay, so Ram sir, this is a very good place for you to average your Tejas. I had posted a few days ago also that it is forming a support zone bound setup. Eventually, it will be like this. So, make, unless this low level breaks of 651, which can be your stop loss, you can use 645, 650 zone as your stop loss weekly closing basis. And अगर वो नहीं टूटता है, if it does not break, it is going to go back up. It is very clear. It is forming a W type setup right here. So major move will come above 913, which itself is very far. So धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे थोड़े से रेजिस्टेंसेस हैं, पर it is already at the lowest level of the chart. So it's a good place to average Tejas. फ्रेश एंट्री अगर किसी को लेनी है तो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने के लिए. लेट सम मोमेंटम कम, देन वन कैन एंटर फ्रेश. बट सिंस यू आर, इफ यू आर होल्डिंग फ्रॉम हायर लेवल्स, then this is a very good place to average your Tejas. For long term, so didn't follow SL 3.8% of. No, it's okay. You didn't follow SL, but uh, it is right now at the actual, major stop loss level. कि इसके नीचे, if it goes further below 650, then it is a big problem, because then next supports are around 370, 380, and 500. So that is another big fall. So if it breaks 650, then you have to think about what to do. But as of now, it is a good place to average your position if possible. Tata Tech. It has again come in the discussions. It was a very nice setup here. It did not work out. मैं भी घुसा था यहाँ पे. थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकले थे इसमें से बस, because it reversed. So now it is reversing again, and again it is struggling at 27 EMA. What do you want to do for Tata Technologies? One of the few stocks which I badly missed to follow stop loss, but no issues for me in waiting patiently. 1021. So, okay, so you bought with me only. I also bought here 1021, 1030 level. Okay, okay, do one thing. Wait for it to give a very strong closing above 27 EMA, and if possible above the blue EMA, the 50 EMA. And see, right now it is turning down again. If we see on daily time frame, you see it is rounding top now. Well, like we say rounding bottom pattern, it is making a rounding top. So it might come down again to this old support level and then go back up again, because it has started making higher highs. So overall, the setup has become positive. It was making lower lows and lower highs. Now it made equal highs here, and then it made a higher high, and now it will make a low. It also made a higher low and higher high, and अब higher low बना के वापस ऊपर जाने के chances लग रहे हैं. So it is a stock which can be averaged, but इसको 27 EMA के ऊपर ना अच्छे से close होने दो. Let it make a strong candle above 27 EMA, then average it and let it be. Okay, next is Nuvoco Vista. Okay, काफी sideways stock है काफी टाइम से.
बट मतलब वापस अब अच्छे लेवल पे है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो इस पूरे इतने लंबे टाइम का ब्रेकआउट होगा ये। हम्म, ये पूरा जोन एकदम फ्लैट रहा है। बॉटम्स वही बने हैं लेकिन। ठीक है, टॉप्स नीचे आते जा रहे हैं, सो स्ट्रेंथ तो कम है बट ओबीवी इज गोइंग ऊपर। दिस इज अ वेरी इन्वेस्टमेंट टाइप स्टॉक। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है कि डाल के छोड़ दिया और कुछ साल बाद इवेंचुअली इट विल ब्रेक आउट एंड गिव गुड मूव, बट अभी ट्रेडिंग वाला कोई सेटअप नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू डू? IPO allotted. Okay, so you have from this price 485, hold or average. Okay, so my mind says here कि okay average अच्छा रहेगा because now price is much lower, but the thing is कि uh, this is not something that is giving very fast move, मतलब मैं expect भी नहीं करूंगा इससे कि एकदम से भाग जाए, because इतने टाइम से flat ही है. It should give a move, but something like this. एक second. Let it give a breakout. It is at a very nice trend line resistance. Let it go above this level around 370. Then you can try to average. Or if it was me, I would just let it be कि अच्छे से मूव आएगा तब की तब देखेंगे, बिकॉज ये कब से साइडवेज है और कितने टाइम साइडवेज रह सकता है कोई कुछ कह नहीं सकता. बट ट्रेंड लाइन वाइज इट इज एट रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट आएगा तो थोड़ा मूव तो आना चाहिए. नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसका इट बिकम्स 418, which is still much lower than your cost. So there are multiple resistances still. So averaging here is slightly risky. Let it give a breakout, then maybe we can discuss it again. Car trade. Car trade is good. IPO breakout finally had come, but was it did not really sustain. But it should give the move again. The level is 1618. So once it goes above 1618, it will be an all EMA breakout as well as again the original IPO level breakout. It is not being respected much, but it is still there. So car trade IPO allotted now on buy price at buy price. Yeah, it's almost at your cost. So I think you should hold this for now. It can give you a good move. Vakrangi in loss. This was that penny stock, right? Yeah. This had to be in loss only. I mean, I really don't know what to say because it is just making lows and lows. So if I tell you, ki, okay, book loss, and then suddenly it starts going up because these are penny stocks and they run with news. कोई भी इसके कंपनी के बारे में न्यूज आ जाएगी और वो तुरंत अपर सर्किट में जाना शुरू हो जाएगा. अभी वो लोअर सर्किट्स लगा के नीचे आया है, अब अपर सर्किट्स लगा के ऊपर चला जाएगा. So I completely avoid investing in stocks like this. But since you have already made it, I hope it is not a very big position. And if it is small, just let it be. It might just turn around. And if it is large, then you need to make a decision because the stock is at its lowest. There is no further support. Like it can make a new low. So then that would be again because there is no support where it can stop. There is no point in the chart. It is at all-time low almost. So I really can't say much about Vakram. I hope it is a small position which you can just leave. PNC Infra is making a nice reversal. 488. Yes, yes, please average. If you have it at 488 at the almost the highs. So yes, if somebody has PNC Infra from the highs, this is a very good place to average. It has just given 27 EMA breakout this past week, and I do see very good volume. OBV is also pointing up.
You can see it has now shot up. So BB is also good, and RSI is fine. There is no divergence play, I think. Maybe it was here. There was some divergence here, but now there is no divergence. So it is just moving on its own steam. So just average this. Yes. One can enter fresh also in PNC Infra. And if you are holding from higher costs, then please average. This is a good place to average PNC. Next is UCO Bank 61. UCO Bank 61. Bro, why are you holding for a stock with 50% loss? 10-15% it should be your logical stop loss. 61 was like here in all-time high range. And after it started falling, see, do you see this orange line? This was my trailing stop loss. I was also in the stock. We entered somewhere here. We made good money in this. This orange line was my trailing stop loss of 20 EMA. I was trailing. It was working with 20 EMA. As soon as it broke, I would have exited here at 51. And it is going on falling now under the EMA levels. Overall, PSU Bank index is at a very good place. It is giving a breakout, it is moving up, but as I explained before also, the smaller stocks which have less weightage in the index might not move in the same way like the bigger ones will move, like SBI and all. So I am not holding my breath for these small banks that they will run very good because right now there are no setups. This is below all EMAs, no bullish, indications. Maybe in the coming week or 2 weeks it can go up and then we can see, ki, okay, now it looks good. But right now it is not making any sense to. I don't know if I can tell you to average it here also because let me see. Okay, ठीक है. It is starting to form a base. If it goes up, तो अच्छा reversal आ सकता है. And looking at monthly. So monthly is giving a different view. Mm, UCO Bank, buy price 61, hold, exit or average. See, there is no point in selling it now because it is at a support and making a base. So if the base fails, then one should exit. So if it goes below 27 and closes below 27, that would be a base failure. So that would be your cue to, okay, this is not working, exit it. It would be a big loss, I understand, but this holding was not logical. And averaging it here also is not very intelligent. I'm not sure which direction it is going to go. So let it break 27 EMA. If it breaks 27 EMA around 36, 37, then you can average it. And until then, you can hold it. SKM egg production, egg products. Okay. Setup, a nice setup is forming, but it is a very sideways stock. ये ऊपर EMS के ऊपर ब्रेकआउट इसने कभी दिया ही नहीं है. It is again trying. So if it closes above 230, we might see a good move. I'm not sure if you're holding or if you're wanting to enter. So if you're holding, you can hold. Stop loss तो नीचे है इसका, but you can hold and you can add more above 231. Swiss military, decent consolidation, base formation, and previous resistance also, previous support जो वहाँ इसके पास है. Once it closes above 2930,
then good move can come. LG Equipments, it's trying very hard to break this level. I've set an alert for 540 plus closing. So above 540 it would be good place to enter. PG Invit. ये तो Invits are basically these are dividend giving stocks, high yield stocks जो आपको dividends मिलते हैं इसमें regular. Don't look for too much growth in this. It will move slowly as the um, energy index moves. Energy index अच्छे levels पे है. So if it moves above 85, 86, so you might see it go up to 93. बट इन्वेट्स जितने भी होते हैं ये सब डिविडेंड यील्ड के लिए खरीदते हैं लोग. जीएम. GNA, I don't see anything interesting. It is weak and there is no real setup. I'm not sure if you're holding or not, or if you're wanting to enter. If you're wanting to enter, don't. If you're holding, there is not much I can tell you, but below 300 closing would be very bad for it. UFO. Again, I'm not sure if you're wanting to buy or if you're wanting to sell. So if you are holding from highs, then this would be a good place to average as it's the previous bottom. So you can add it, add more here. Don't exit below 57. मतलब exit below 57. That would be the stop loss. Hmm. Track Traction Technologies. I think that is how I would pronounce it. Traction. Again, no setup. Did a range breakout but did not survive. If it makes a new fresh low, then one should exit. I really don't like these stocks, these 40, 50, 100 rupee stocks. These are micro caps होते हैं ये ज़्यादातर. If I'm not wrong, these are micro caps. तो इनके मूव बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं. रिजल्ट आते हैं तो चलते हैं. ये हल्का सा भी रिजल्ट नॉर्मल सा हो जाता है तो ये बेरिश मोड में आया हुआ है कब से. It went up to 122 and now it is at 56. Jamna Auto, same kind of setup. Jamna Auto closing of 95 would be good. Above 95, you can average if you are holding from highs. And if you want to enter fresh, again, above 95. Hexacom, bearing loss, I didn't follow stop loss. However, holding for long term. So at which place we need to average or exit. I think I've told you for all of them. Hexacom भी देख लेते हैं. Hexacom you can average here. Above 197, 198, we can see good move in Hexacom. You can average Hexacom. I'll just check again एक बारी दोबारा. GNA don't average. Abhi GNA average would be around 250. If you really want to hold this, then 250 के आसपास it would be good place to average. UFO UFO you can average. Jamna Auto Jamna Auto above 95 you can average. Hexacom I already told you above 27 EMA which is around 192 and above 200 you can average it. I hope you have noted down the levels. And Karan is asking about Vito. Okay, Vito gave a very nice move last week, but actual resistance is much higher. So up till 146, so it is going definitely. After that, we will know if it is going above that or not. Because इस रेंज से कई बार ये वापस आता है. बार बार कोशिश करी है इसने तोड़ने की, नहीं तोड़ पाया. सो 145 146 के ऊपर अगर जाएगा तो अगला मूव आ सकता है. 170 खुल सकता है. बट until then it is going to remain sideways. You bought Vito at 134. So just last week only you bought it.
So 146 is open for the taking. It can take 146. वहां से वापस आ सकता है. So 146 के आसपास check the momentum in the charts. वीटो हो गया. KNR. KNR buying price is 360. 360. Hmm. KNR you can average. पिछले सपोर्ट के पास है. इट शुड नॉट गो बिलो 200. 190 के नीचे और जाना नहीं चाहिए. जो ये लेटेस्ट कैंडल है ना, see, it's a old support also, and the new drop candle was also at the same level. So keep your stop loss at 190, and अभी आप इसको एवरेज कर सकते हो until 190. 1.1. This is very nice. एक आखिरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह गया है. 69, 70, above 70 it will give a move to all time high of 77, और उसके बाद ऊपर जा सकता है. Looking good, you can hold this. 61, it's fine. This is a good setup. Not much to worry about. Shri Digvijay Brine. Shri Digvijay. Okay, it was trying to give an EMA breakout, but वो reverse होता हुआ दिख रहा है. So buying price 117. Okay, this is a higher item. Absolute, absolute top 117. I see. What? When this stock was 6,000 rupee, must be some glitch. Anyways, so you bought it at absolute top. It has almost never been there again. Okay, if it breaks out of 50 EMA above 85, you can average it and then hold. Otherwise, if it goes down, if it starts going down, you should think about exiting. Hmm, Suzlon. Suzlon though moved well ना, I think. I don't really track this stock. मेरे को ये वकरंगी, Suzlon इन सब से एलर्जी है. See, the move was good. This was the all EMA breakout. After that, good move came, and now it's back down. Uh, अभी होल्ड तो करना बनता है इसको. इफ यू आर होल्डिंग, अगर फ्रेश एंट्री चाहिए तो 63 64 के आसपास फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं. यू शुड होल्ड दिस. बेसिकली around 50 EMA should be the stop loss, which is 57, 57, 56. Zim Lab. Zim Lab is giving a breakout, but upper wick बनाई है इसने इस हफ्ते, but otherwise it's giving a breakout. ठीक है. एंट्री करनी है कि बाइंग लेवल 100. So this week only you bought. ठीक है, looks good. सी कमिंग वीक में देखो कैसा मोमेंटम आता है इसमें. अगर ऊपर जाता है तो स्टार्ट ट्रेलिंग. अच्छा सेटअप है. फर्स्ट टारगेट शुड बी 122. स्पंदना. स्पंदना कुछ भी नहीं है यार इसमें तो. एकदम ही बॉटम पे है. कहाँ अच्छा खासा राउंड बॉटम बनने वाला था. टॉप ऑल टाइम हाई जाने वाला था, और जो गिरना शुरू हुआ है तो मतलब ऑल टाइम लो बना दिया उसने. दिस इज वेरी बैड. 501. 501 you have this stock. Must have averaged it multiple times.
Average it above 27 EMA closing, not before that. 327 करीब, इसके ऊपर येलो ईएमए के ऊपर जब क्लोज होगा ना तब एवरेज करना है इसको, उससे पहले नहीं। वही उसका मेन अभी रेजिस्टेंस है। एनएमडीसी प्रवीण मैंने 2 हफ्ते पहले लिया था। तो इट इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, वो ऑलमोस्ट हुआ था जब मैंने लिया था, पर अगले हफ्ते वो नीचे आया, अब इस हफ्ते वो वापस थोड़ा सा ऊपर गया है। तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की जगह पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो एनएमडीसी में नई एंट्री बनाई जा सकती है, दिस इज अ गुड सेटअप। आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट टारगेट ऑफ 82 एंड 82 83 फर्स्ट टारगेट, एंड देन 95, उसके बाद ओपन हो जाएगा। सो एनएमडीसी वन कैन बाय फ्रेश, एंट्री लेवल इज देयर right now. June month target, this kind of predictions I really can't make. But my targets I have told you. First target is 82.6 and final target is 95. If 95 gives the breakout, then fresh run will begin and then targets will be open because we don't have any data for the upper side. Vestas has shared his whole portfolio. BEML is fine. थोड़ा resistance है 4400 से 4600, and let me open the chart. I know the levels because मेरा active trade है। See, this is the active resistance जिसको ये बीट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से रिटर्न होना शुरू होता है ना तो एक बारी के लिए बुक करना ठीक रहेगा। इसने काफी अच्छा रन दिया है। तो आई एम होपिंग कि इसका ब्रेकआउट मिल जाए या यहीं पे कंसोलिडेट करके 1-2 हफ्ते में ब्रेकआउट दे दे। तो वो दे देगा तो फिर देन इट इज गोइंग ऑल टाइम हाई अबव 4650, 40, हाँ 4600 और सो, 4550, 4600 इट इज, ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो ऊपर जा रहा है, नहीं तो नीचे आ सकता है वापस। कहाँ तक आ सकता है? नीचे आ सकता है, ज्यादा नीचे भी आ सकता है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 3800, 3700, 4000, 3800 तक आ सकता है नीचे ही, अगर वापस रिटर्न होना शुरू हुआ तो। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो वी आर गोइंग ऑल टाइम हाई। कोचिन, डोंट, नथिंग टू वरी अबाउट। कोचिन बुक सम एट 2800, 2800 जोन के आसपास थोड़ा बुक कर लेना, and then it might make a handle and then go up, or like GRSC and BDL it might just go straight up. तो लेकिन आप यहाँ इस जोन में थोड़ा सा बुकिंग करना बहुत जरूरी है। ड्रेज और ड्रेज कॉर्प इज अ नाइस सेटअप, लुकिंग गुड। ड्रेज कॉर्प you can hold, it is above all EMAs, momentum should come. GRSC I have booked completely the invested amount. I'm holding free shares. We're at around 110% we booked. So now we'll hold, it might come retest this level and then go up. तो जब ये इसको रिटेस्ट करेगा 2800, 2800 के आसपास, तो फिर से भी ऐड कर सकते हैं। और अभी के लिए यू शुड होल्ड, इफ यू बुक हाफ देन यू कैन होल्ड, देन यू शुड नॉट फील एनी स्ट्रेस। मैथन अलॉयज, okay, so Mathan alloys 1115 you've bought. The resistance area is 1150. Above 11150 it might give good move, उससे पहले नहीं। Onward Tech, Onward Tech is consolidating, it needs to break out 50 EMA above 331, only then it will give further move. Reliance Infra, इसमें मैंने ट्रेडिंग पोजीशन क्लोज कर दी है पूरी। I had a good quantity from 200 with SAI I took, एंड अभी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आ गया है, बट मैंने अभी के लिए ट्रेडिंग पोजीशन क्लोज कर दिया है। आई हैव सम क्वांटिटी विच इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो पड़ा रहेगा। अब लेट्स सी कि एक बारी के लिए इट कैन गिव रिट्रेसमेंट और इट इज गोइंग टू मूव completely up only, तो इट इज एट रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेवल। 371, 375 is the resistance level,
एंड यहाँ पे ही मुश्किल है, यहीं पे एग्जैक्ट क्लोजिंग हुई है। वंस इट क्लोजेज अबव इट तो थोड़ा शायद और मूव आए, पर पिछले ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब ये 52 वीक हाई तो यही है ना, उसका उसका क्लोजिंग आ जाता है तो उसका क्लोजिंग ऑलरेडी आ गया है, उसका ब्रेकआउट हो गया है, सो momentum is still positive, but this move is very fast, so I'm expecting a little dip soon. Let's see. R power, same same problem. It is also at resistance, so please book some here. हाँ मम्मी, हाँ मैं क्लास में हूँ, बोलो। अभी नहीं हटा सकता मैं। नहीं। Okay, so Reliance is also at resistance. Reliance Power, you should make a partial booking here definitely, or you can also make full exit here and wait for a retracement or a breakout of this level. RVNL I am also holding, it is at a good place. अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है ये ठीक से, it has not started yet. So first target for RVNL is 500, 6 and then 600 and 650. Sharda Crop. Sharda Crop also do some partial booking. It is very important because all-time high resistance is very near now. Once it breaks that, further move we can see. Techno E. Again, same setup. If this is also a trend line resistance. See, I'll draw it and then you'll see. This is a trend line resistance. Do part booking here. If it breaks out above this level, next breaks out above this candle, this trend line, then first target is 1716 and then 1800. Theta guard is also fine. Vari energy, not much of a setup. A movement above 3230. Queries onward tech, math and all these week doesn't look good on the view. I checked all the stock. Defense stocks you can hold अभी ऐसा कुछ नहीं है. See defense में क्या है? This is the defense index जो मैंने बनाया था. तो हमारा ऑल टाइम हाई करीब करीब यहाँ पे जिसके पास है. So we need to see कि if it is going to make momentum and break it, or if it is going to turn. So if it is, you should be doing partial bookings in every defense stock right now, except for Cochin Ship. I don't see any other stock which has huge potential immediately because they are already at all-time high. Only Cochin Ship is pending, जिसका ऑल टाइम हाई अभी आया नहीं है, और वो 2800 तो मेरे को दिख रहा है कि जाएगा, बट डिफेंस इंडेक्स इज नाउ एट नियर रेजिस्टेंस. So we need to see if it gives breakout of this or if it turns around from. For hammerhead setup previously it must be below 27 EMA only. See, it's not कि आपको 27 EMA देखनी है hammerhead setup में. Hammerhead setup is multi EMA breakout. तो मल्टी ईएमए क्या होगा कि समझ लो कोई स्टॉक 50 ईएमए के ऊपर चल रहा है, एंड देन अबव इट इट हैज 27 20 एंड 10, so it breaks all three in one single candle, so then that is a good setup. प्रीवियस वीक 27 के नीचे इसीलिए कंडीशन डाली हुई थी मैंने चार्टिंग वाले स्कैनर में कि आई वांटेड एटलीस्ट 2 3 ईएमएस टू बी ब्रोकन. तो 27 के नीचे हो और इस हफ्ते 27 20 एंड 10 तीनों को ब्रेक कर दिया, so it's a triple ईएमए breakout. But otherwise, see, you cannot uh, automate this with
चार्टिंग स्कैनर्स, आपको एक्चुअली चार्ट देखना पड़ेगा एंड देख के ही आपको समझ आएगा कि इफ इट इज अ मल्टी ईएमए ब्रेकआउट, यस और नो, और इफ द ईएमएस आर अपसाइड डाउन, 50 इज अप, 10 इज लो, क्या सेटअप बन रहा है, इज द स्टॉक इन बेरिश मूवमेंट और बुलिश मूवमेंट. So you have to decide by seeing the chart. For intra-scalp, what I understand up to now is that when stock reverse from any EMA, makes a good candle, we need to take entry in it. So yeah, see, intra setups, I have two intra setups that I do. One is when stocks go very tight sideways and below a certain level, and then that level I mark as my breakout point, and as soon as it goes above that breakout point, then I take an entry. That is a breakout setup. And the other setup is that the stock has run up high and now has come down to surf on the EMA levels. It is slowly going on 20 or 27 EMA and uh, turning around, making a U-turn. So at that point also, I take an entry which I call a slow intra. That I'll enter and wait and keep trailing with the trailing stop loss of that EMA on which it is, surfing. If it goes down, then I will close. And if it is slowly going up, then I will keep trailing it. Okay, targets. How do we set targets? So this was the breakout where I decided कि okay, defense index is ready to enter. ये यहाँ पे जब breakout हुआ था, तो उसके बाद what are targets? Targets are basically upcoming resistances. The the next resistance is target one. The, the final resistance is target two. All the resistances are your targets. And what is the stop loss? All the supports are your stop loss. So how do we decide all this? For example, okay, like Sharda Cropchem, if we had taken an all EMA breakout, like this candle gave an all EMA breakout, and if we had entered here, so what would be our first target? First resistance is this previous high, and then final resistance is all-time high. So these two are our targets. First target is now done. The second target is this. After that, it's open. And if we had taken entry here, then what would be our stop loss? It can either be the candle bottom, that is a stop loss level. The breakout candle ka bottom can be the stop loss, or previous support can be the stop loss. So previous support is this. यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया. So this is a valid support. This is a stop loss. This is target one. This is target two. Basically, all resistances that are upcoming are targets, and all supports that are below the price that we have bought are stop losses. So we have to decide our risk reward basis ki if we have taken a support bounce, so then we know it is very near support, so our stop loss is very small. And if we are taking a breakout, then we know that support is going to be a little far. So aggressive stop loss is the breakout level itself, that it has broken out of this resistance. Like for example, this is a breakout of this resistance. The target one has been broken out. So now this should become a support. When a resistance breaks, it becomes a support. So now when it comes back here again and goes back up, so this is a support now. So this can be your stop loss, and when it goes up again, and this is the target. Resistances are targets and supports are stop losses. IREDA. IREDA is very tight setup, but इसका ना they have announced a quick जिसमें वो 173 के आसपास ही सेल हो रहे हैं, which is at cost only, so it is not very low. So I don't think it should worry too much. Once it breaks out of all the EMAs above 178.5, yeah, the alert is for 178.5, then it can give you a good move upwards. You have IREDA at 232. You should average IREDA. Deep. You should average it here. Aeroflex 241.
Aeroflex में there is no setup right now. It needs to break the EMAs to move. So above 180 when it goes, that would be an all EMA breakout, and that is when you should average the stop at this level. Sorry, at this level. 179, 180 के ऊपर इसको एवरेज करना, जैसे ही ये क्रॉस करेगा दैट वुड बी अ नाइस ब्रेकआउट, उसके बाद मोमेंटम मिल सकता है। तो 180 के ऊपर एवरेज करना, अभी मत करो, अगर ज़्यादा नीचे जाता है तो एग्जिट का सोचना पड़ेगा। एल जी ब्रोस, वेरी साइडवेज फॉर नाउ, देर इज नो रियल सेटअप। ईएमएज इसमें काम नहीं करेंगी बिकॉज दे आर ऑल स्मैश्ड अप टुगेदर, so there is no actual EMA band right now. The only EMA that is actually supporting is 100 EMA at the red one. So it is above all EMAs technically, yes, and but it's not a really a good setup, because see, I'll draw a trend line and then you'll see it is returning back from this trend line. So now again it will go up eventually. When it breaks out of this, then it can give a move. Oof. Vinati. Vinati is in good momentum, continue to hold, can enter fresh also. All EMA breakout was 2 3 weeks ago. AGI leaning back. Again, same. Above all EMA consolidation, good setup. You can add this. Automotive axles. I don't have this. And no axles. Auto axles, you'll see a good move above 1863, not before that. The trend line will also be broken then. I draw them to show you, but eventually when you practice enough, you can see the trend line without drawing it. So above 1863, the trend line will also get broken, and all EMAs will also get broken. The root is making a base here. It is it has fallen a lot. So this is the box basically. So I think थोड़ा सा और भी wait करना better रहेगा. Use 27 EMA to make an entry. If you are holding from above, then you can average at this place. Yes, bank, no bank. Please avoid. मेरा कोई, I will never buy this stock ever. Please avoid. भागता है तो भागने दो, पर इसमें पैसा मत फंसाओ. Gulf oil. Sideways consolidation. Again, EMAs are all smushed together, so they are not going to really help. It's completely sideways consolidation. Wait for some direction if you want to enter. If you're holding, then you don't have to do anything right now. Rosari is falling, but making a setup. Rosari, if you want to average, then around 580 or 600 you can average if it comes down. Otherwise, just hold. Tattva Chintan. Okay, finally it is looking good above 50 EMA. So if you want to enter Tattva Chintan, you can try with a small entry. Do not put too much money in this, because OBV is still at resistance only. वो breakout नहीं आया है जो आना चाहिए था. But ठीक है, move अच्छा है, volume भी है. So you can enter Tattva Chintan, but don't put too much money into this.
Same with Tanla. It's a investment type stock. If you want to average, you can average it. Decent space, decent spot पे है, 27 EMA के ऊपर है, तो एवरेज कर सकते हैं इसको. सेल. Sale you can hold very without much tension, not an issue. You have it from 157 and should go. अच्छा move चल रहा है, आएगा. Metals are on the move. 150 तो easily आना चाहिए. Specialty restaurants. ये मैंने एक टाइम पहले लिया था, immediately stop loss हिट हुआ था इसमें. No setup right now. 191. Okay, mark this in your chart. 114. So below 100, 114, if weekly closing comes, then you can exit. RP Tech 417. RP Tech is again making a base breakout, so अभी होल्ड कर सकते हो आप. एवरेज करने की जरूरत नहीं है. इट इसमें मूव आएगा तो बहुत फटाफट कवर हो जाएगा. 417 यू आर अराउंड अबव आईपीओ ब्रेकआउट. यहाँ पे लिया था आपने आईपीओ ब्रेकआउट के ऊपर. ठीक है. टाटा टेक we've already discussed. Vodafone again. Vodafone, Yes Bank, I will not analyze because there is no point. Amara Raja is in this zone. Put an alert of 1119. You bought it at 1350. You can average at this zone, current zone. You can average, and above 1119 or 1120, you can see a good move. Motherson 189. Motherson, please hold. It is giving a very good move. It is probably going to go back to all-time high. No need to sell. Continue to hold. 189 एवरेज है आपका. 189 तो इजी आएगा, ऊपर भी जाएगा उसके. हुडको इज ट्राइंग टू गिव अ ब्रेकआउट. हुडको में 244 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए ढंग की. इसमें अभी तक आई नहीं है. इस बारी भी 246 की क्लोजिंग है, बट द अपर विक इज नॉट नाइस. सो एक अच्छी सी क्लोजिंग और आ जाए ऊपर की तरफ, तो इट इज गोइंग टू मेक अ गुड मूव. You want to, what do you want to do? View on Woodco. Woodco is bullish above. It just needs a good weekly close. JK paper 489, 374. JK paper once closes above 382, it should give a good move. 489, 489 is it's going to be its first target basically. This one. So if you want, you can average it. Otherwise, just hold. 20 microns. Good to hold. All EMA breakout, supporting consolidating above all EMS, कोई टेंशन नहीं है. ABSLAMC, for swing trading, no fresh entry in this. It has already run up. It is too late to enter here. If you are already holding, then continue and trail it. SRU steals. मोहिंदर सर, पेनी स्टॉक्स पे ना टेक्निकल्स बहुत अच्छे चलते नहीं है. ये दीज आर ऑल न्यूज एंड ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स. Is it a UCLC stock? Not much, but little bit UCLCs. ओवरऑल सेटअप ठीक लग रहा है. आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो इसमें, बट
मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ पेनीज, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस पे कुछ काम करेगा भी कि नहीं करेगा। इसका एक्चुअल ब्रेकआउट ईएमएस के हिसाब से आएगा 7.6 के ऊपर। जब ये 50 ईएमए को ब्रेक करेगा तो तुरंत अच्छा मूव दे सकता है, जैसे इसने इस बारी 50 ईएमए को ब्रेक किया था तो फटाक से गया था ये हमारा 11 से 15 तक, और फिर इमीडिएटली लोअर सर्किट्स। सो आई रियली डू नॉट वांट टू डू analysis on a stock on which analysis don't work, but you can try. नेचुरल गैस, उषा जी मैं कमोडिटीज करता नहीं हूँ ज़्यादा। नेचुरल गैस इज लुकिंग गुड, बुलिश व्यू रखिए। यस, वेरी नाइस, कीप अ बुलिश व्यू अबव 3.93 on the global chart XNG USD. It would be a super breakout. So the view is bullish as of now, but you want to see the smaller time frame, I'm sure. ये व्यू बुलिश ही है अभी भी, कंटिन्यू बुलिश व्यू in natural gas. But please don't take my analysis on commodities very seriously, because I don't trade commodities. So people who trade commodities will give you better insight. MMTC was बड़ी जोर से भागा था नहीं, क्या हुआ था इसको? हाँ, so it has come down, right? अमन, you didn't write खरीदना है बेचना है क्या करना है इसका, so आई एम होपिंग तुमने हाई पे ना खरीदा हो और अब लॉस में हो। बट अगर ऐसा है तो योर स्टॉप लॉस फॉर MMTC 63.25, बिलो 63.25 वन शुड एग्जिट। जब तक उसके ऊपर है तब तक यू कैन होल्ड बिकॉज इट इज अबव ऑल ईएमएस। हिंद कॉपर किंग मेकर जी, हमने फ्राइडे को एंट्री ले ली है, देखा जाएगा क्या मूव करता है। इट इज एट लेवल्स वेयर इट कैन बी एंटर्ड। बालाजी अमीन्स, बालाजी अमीन्स, दिस इज ऑल्सो एन ओबीवी चार्ट। Balaji Amin's real move is going to come above 1557. When 1557 is crossed or 27 EMA which is 1522, ये जोन एक बार क्रॉस हो जाएगा ना तो ये इमीडिएट टारगेट ओपन्स ऑफ 1936, so that you can trade. Happy forging, हैप्पी फोर्जिंग इज लुकिंग गुड जब तक कि 50 EMA के ऊपर सस्टेन करता है। एक्चुअल ब्रेकआउट वुड बी अराउंड 1045 के आसपास। इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का रन ऑलरेडी हो गया है, तो अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है इसका, this place. It needs closing above this, then all-time high level is open. But it might just come down and then go back up. Thyrocare, वाह, ट्रेड पहले भी ट्रेड किया हुआ है मैंने इसमें, बहुत ज़्यादा लाइनें खींची हुई हैं। थायरोकेयर डबल टॉप बना है इसका यहाँ पे, सो इट माइट शो सम बेरिश मूव, और जब वापस बाउंस होने का सपोर्ट आएगा 805 इज द सपोर्ट। थोड़ा बीएससी स्टॉक है कि नहीं, एनएससी है? प्रशांत, इसके लिए देर इज अ वीडियो, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं वीडियो लिंक्स दोबारा शेयर कर दूंगा। हाउ टू यूज ओबीवी। आरएसआई के लिए मैंने बनाया नहीं है, बट आरएसआई इज नॉट समथिंग विच वी कैन जस्ट कवर इन 15-20 मिनट्स। उसके लिए अच्छा लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर मेरे को टाइम डालना पड़ेगा। मे बी वी कैन डू अ सेपरेट लाइव स्ट्रीम जस्ट अबाउट आरएसआई, मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट वीक आफ्टर दैट। ओबीवी के लिए वीडियो है, वो मैं लिंक्स डाल दूंगा। Thyrocare, Subros,
सुब्रोस पटेल सर, आपको बुक करना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अबव 827 इसमें दोबारा एंटर कर सकते हो अभी के लिए। इफ यू ऑलरेडी हैव इट, यू शुड बुक इट। ग्रैन्यूल्स मैंने भी लिया हुआ है। इट इज स्ट्रगलिंग एट द ब्रेकआउट। अब ये इसको कब मूव आएगा, इसमें वी कैन वेट। ब्रेकआउट हो चुका है, जस्ट हैव टू वेट। ग्रैन्यूल्स में मेरा स्टॉप लॉस है 10 EMA के आसपास, 490 से 500 के आसपास। PGEL। हम्म। PGEL माइट बी कमिंग टू 50 EMA एक बारी। और अगर आती है तो वो चांस मिस मत करना। इफ इट कम्स नियर 700 और सो, मेक श्योर टू ऐड इट। मेरी एवरेज कॉस्ट भी 694 ही है। आई एम जस्ट होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। ग्रैन्यूल्स अभी बताया है, शो है। OBV and RSI, हाँ। हो गया हमारा डिस्कस। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड हैप्पीएस्ट माइंड। ये बहुत ना पॉपुलर स्टॉक है फंडामेंटलिस्ट लोगों के लिए। उनको लगता है कि बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, इवेंचुअली बहुत बढ़िया रन देगा। और बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। ये जितनी बार ऊपर जाएगा उसमें उतनी बार सेलिंग आएगी, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टक इन दिस स्टॉक, जस्ट लाइक यू आर स्टक। देर आर thousands and lakhs of people who have bought the stock for investment। और सबको बस एग्जिट चाहिए कि थोड़ी कॉस्ट के आसपास आ जाए तो निकल जाए। जब तक ये लाइटन नहीं होगा ना लोड, तब तक ये चलेगा। So I would completely like to avoid this stock. If you are holding, you are holding from 872, so basically here, यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया होगा तब आपने लिया होगा, पर वो कुछ भी नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया और नीचे ही जाते जा रहा है। ये बहुत पॉपुलर स्टॉक है, बहुत जगह पे सजेस्ट किया जाता है इसको एज अ कि इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। वो दिख रहा है मेरे को चार्ट में क्या अच्छा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। एनीवेज, सो क्या करना चाहिए इसमें मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये टेक्निकल चार्ट तो है ही नहीं कुछ। देयर इज नो सेटअप। Lancer containers also at bottoms. Wow. प्रशांत, यू कैन एवरेज इट एज ऑफ नाउ। ये अच्छी जगह है, यहाँ पे एवरेज करने का चांस ले सकते हो आप ऑलरेडी 15 के आसपास। गोदरेज एग्रोवेट, बहुत बढ़िया। फाइनली इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट। गोदरेज एग्रोवेट इज अ वेरी गुड सेटअप। मूव करना चाहिए अच्छा। इट शुड मूव वेल। रेलवे स्टॉक्स वी हैव एंटर्ड। अब आराम से बैठो, टाइम लगेगा थोड़ा, जब चलेंगे तब कोई रोक नहीं पाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। I have Titagarh, I have BEML, I have IR Ircon, and I have Titagarh, BEML, Ircon, and RVNL. Plus उसके अलावा I am also holding nice quantity in Grow Rail ETF, which is the ETF for rail stocks. Plus GBS is a good setup. इसमें immediate resistance यहाँ पे है 149, but this is an all EMA breakout. One can enter here. Immediate resistance है 149 पे। Above this, it can go all time high again. So immediate target ये रहेगा। So I think we should go to the main group now, इसमें अगर कुछ है तो। इंट्राडे के यार मेरे को एग्जांपल्स एक्चुअली निकाल के रखने पड़ेंगे। आयरन मैन, आई विल नीड टू यू नो कलेक्ट सम एग्जांपल्स एंड सो दैट आई कैन शो यू। बेसिकली व्हाट आई डू, जितने भी मेरे एक्टिव ट्रेड्स होते हैं उनके सबके चार्ट्स मेरे स्क्रीन पे खुले रहते हैं। फॉर एग्जांपल आई जस्ट डू दिस टू 8, एंड मैं उसमें वॉच लिस्ट से 8 अलग अलग स्टॉक खोल लिए।
फिर एक और विंडो खोल ली, उसमें 8 अलग अलग खोल ली, ऐसे कम से कम 8-9 विंडोज खुली होती हैं। ईच विंडो हैज 8 स्टॉक्स। सो आई कीप वॉचिंग माई ओन चार्ट्स थ्रू आउट द डे कि क्या चल रहा है उनमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में। एंड जैसे ही मेरे को कुछ सेटअप दिखता है तो मैं उसमें बना के एंट्री बना के घुसता हूँ इंट्राडे के लिए। बट उसके लिए ना आई नीड सम, मेरे को पहले से कुछ वो सेटअप्स बना के रखने पड़ेंगे दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। वो अभी एकदम से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे ढूंढूं मैं उसको। इट्स समथिंग लाइक दिस, जैसे अब मैं इसको, सो लाइक दिस, जैसे अभी 8 चार्ट हैं, तो these will keep open, और ऐसे ही मल्टीपल विंडोज में 8 चार्ट्स ऑफ ऑल माय स्टॉक्स आई विल कीप सीइंग। एंड आई विल वेट फॉर सेटअप्स टू फॉर्म। कोई ब्रेकआउट दिखता है मेरे को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, या कोई सपोर्ट बाउंस दिखता है मेरे को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं उनको ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। एंड दैट इज द पिक्चर दैट आई शेयर ऑफ द चार्ट, कि मेरे को ये दिख रहा है, इस लेवल के ऊपर इसमें एंटर कर सकते हैं, उस टाइप से मैं एंट्री करता हूँ। तो कुछ लाइव एग्जांपल्स आई विल ट्राई टू शेयर मोर। एंड इसके ऊपर भी एक हम एक क्लास कर सकते हैं अलग से, कि सिर्फ इंट्रा के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, आई विल मेक यूट्यूब वीडियो तो नहीं, आई विल डू अ क्लास ऑन इट। मैं एग्जांपल्स की स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा अपने पास, या चार्ट्स में मार्क करके रखूंगा, फिर वेयर वी कैन गो बैक टू सी दैट। दैट इज व्हाट विल डू। जीवीएस हो गया। राइट्स, राइट्स का कैसा हाल है? राइट्स अच्छा मूव किया था। राइट्स इज लुकिंग वेरी गुड, कंटिन्यू टू होल्ड, प्लीज डोंट सेल ऑफ राइट्स जल्दी। राइट अच्छा मूव किया है, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी दे दिया है, वहीं पे अटका हुआ था ये 2 हफ्ते से। तो नाउ इट हैज गिवन दैट हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, इट शुड मूव वेल। नेक्स्ट ग्राइंड वेल, नॉट, नो वी कांट डू कस्टम इंडेक्स इन धन। कस्टम इंडेक्स ओनली वर्क्स इन tradingview.com. No other, the broker trading views don't have the custom index options. कस्टम इंडेक्स के लिए मैं स्पेसिफिकली tradingview.com पे ही जाके देखता हूँ। तो ये ट्रेड इंडेक्स है, ये आपका वो डिफेंस इंडेक्स है। ये अगर मैं ये कोड धन में डालूंगा तो वो लेता नहीं है। एंड इवन इन ट्रेडिंग व्यू, कस्टम इंडेक्सेस कैन ओनली बी सीन इन डेली एंड अबव टाइम फ्रेम। इससे कम टाइम फ्रेम में अगर देखना है तो आपको आपके पास प्रीमियम होना चाहिए। तो आई कैन ओनली सी इन डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली एंड मंथली। ग्राइंडवेल नॉर्टन, ग्राइंडवेल नॉर्टन नीचे आके अच्छा बेस बना के मूव करना शुरू कर रहा है। संजिल, राइट, हाँ संजिल। सो I'm not sure if you want to enter or you are wanting to average, but this is a resistance zone of 1892. Above 1892, it should move good. Before, until it breaks that, it is going to remain side. 1833 you have bought. Fine. So immediate resistance is this 1876 zone से लेके 1895 तक। 1895 के ऊपर जब जाएगा तो 50 EMA का भी रेजिस्टेंस आएगा। So there are resistances right now, but the trajectory is looking good. See where it goes. If it breaks 1735, then you need to recheck the status. So you have to decide कि hold करना है कि नहीं करना। UFO and GNA hold or exit are average. We discussed already UFO and all that. I think आपका ही वो था। UFO को एवरेज कर सकते हो आप। GNA को, जीएनए को वेट करो। जीएनए को एवरेज करने के लिए मतलब 270 के आसपास एवरेज करना, अगर करना है अभी पड़े रहने दो। सो वी आर डन विद ऑल द क्वेरीज।
अगर किसी को कुछ और पूछना है, कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में पूछना है, वो पूछ सकते हैं। आर्केड बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, मेरा मिस हो गया यार। फ्राइडे को आई वांटेड टू बाय, मैं बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं घर चला गया था। सो आर्केड इज अ आईपीओ ब्रेकआउट एट 190। तो पिछले हफ्ते भी मैं इसको वॉच कर रहा था, बट ये पिछले हफ्ते क्लोजिंग नहीं दी थी इसने, वापस नीचे आ गया था। बट इस हफ्ते उसने क्लोजिंग ऊपर दी है। सो दिस इज अ गुड प्लेस टू बाय, अभी भी खरीद सकते हो इसको। अगर मंडे को बहुत बड़ा गैप अप ना हो जाए इसमें, सो इसको खरीदा जा सकता है अभी भी। दिस इज एन आईपीओ ब्रेकआउट, इट शुड मूव वेल। गरुड़ा, गरुड़ा इज परफेक्ट सेटअप, वन कैन एंटर हेयर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैंने भी लिया था थोड़ा सा, आई थिंक, बट आई एम ऑलरेडी बुक। तो गरुड़ा इज अ ग्रेट सेटअप, वन कैन एंटर एट दिस पॉइंट ऑल्सो। मंडे को भी लिया जा सकता है, ब्रेकआउट आया हुआ है इसका आईपीओ लेवल का, और ऊपर वाला ये लेवल टारगेट कर सकते हो। जीके वायर, जीके वायर, अमर यार, कुछ सेटअप बन नहीं रहा है इसका, बाकी ये एक सपोर्ट जोन तो है। ये सेइंग दिस इज अ सपोर्ट जोन। अगर यहाँ से वापस ऊपर जाता है एंड ये breaks all the EMAs ना, तो अच्छा सेटअप बन जाएगा। बट अभी इट इज नियर सपोर्ट जोन। इफ यू हैव इट फ्रॉम हाइज, देन यू कैन एवरेज अ लिटिल, बट कोई ज्यादा उसमें बहुत स्ट्रांग वो दिख नहीं रहा है मेरे को अभी। SBFC, SBFC यू बॉट एट 98, वो वेरी नाइस लेवल, बहुत अच्छे लेवल पे खरीदा हुआ है। सो कंटिन्यू टू होल्ड, अच्छा मूव आना चाहिए इसमें, दिस इज अ फ्रेश ब्रेकआउट। और अगर मतलब, डू पार्ट बुकिंग्स व्हेन यू फील सेटिस्फाइड, नेवर जस्ट होल्ड ब्लाइंडली कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वापस नीचे आके ऊपर भी जा सकता है। यूनिकेम, यूनिकेम बन रहा है सेटअप, दिस इज सपोर्ट जोन, यहाँ कंसोलिडेशन हो रही है, दिस प्लेस। सो वंस इट गोज अबव 650, देन इट शुड गिव यू अ गुड मूव। मार्क्सन्स, मार्क्सन्स में ऑलरेडी मूव स्टार्टेड है, यू कैन एंटर। टिप भी आई है थोड़ी सी, ऑलिये में ब्रेकआउट 2 हफ्ते पहले था, गुड सेटअप। आईटी इंडेक्स, ओके। हाँ, इंडेक्सेस देख लेते हैं एक बारी सारे। सो निफ्टी में अभी चल रहा है, एक बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी कैंडल बनी है, दिस इज अ वेरी गुड सेटअप। अबव 25 122 वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अगेन ऑल टाइम हाई वाला लेवल पे जाना शुरू हो जाएगा। दिस इज अ बुलिश सेटअप, आई लाइक द निफ्टी सेटअप। बैंक निफ्टी भी ऊपर बुक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई है, दोबारा फ्रेश ब्रेकआउट आया है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है इस फ्राइडे की। सी, perfect flag. This is a fresh flag breakout basically. This is literally a fresh flag breakout in Bank Nifty in daily time frame. अगर वीकली में देखें तो उतना कुछ बहुत बड़ा वो नहीं दिख रहा है, बट डेली में इट इज अ प्रॉपर फ्लैग ब्रेकआउट। फिर निफ्टी इज एट स्टिल एट रेजिस्टेंस, अभी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया है इसका, बट आ जाएगा। आईटी इंडेक्स यू वर आस्किंग ना? ओके, सॉरी, आई स्टार्टेड विद निफ्टी ओनली। So IT index is Iron Man. IT index is basically surfing between 50 and 10 EMA on weekly time frame. So what I am looking for is a breakout of 50 EMA to add ITBs, because, and why don't I add right now? Because it just might make a double bottom like this. So that would not be very nice. So if one can add ITBs here also, but if they should exit if 10 EMA breaks. And one can add above 50 EMA also. This basically this range box above, this is an inside bar. See, I'll show you. All three, these three bars are inside this bar. This is the mother candle, and these are three inside bars. Whichever side it breaks, it will give you a good move. Mid cap has given a breakout, strong breakout.
but now there is resistance, so have to be a little bit careful. Resistance is close. It's not there yet, but it's close. Small cap resistance is a little far, but it is very overextended. Micro cap also same, and it is kind of starting to, make a curve. So I'm not very excited about micro caps. Let's see how it moves. Pharma B's के लिए pharma index, you see, this is the resistance zone. I want to add pharma B's above this level. Once it gives a breakout of this, I will add pharma B's. I'm already doing SIP in pharma index with the Nippon Pharma fund in my mutual funds. So I don't feel that FOMO की ओहो मिस हो रहा है. तो वो क्योंकि वो सब constantly चल ही रही है. हमेशा से ही चल रही है, वो कोई बंद ही नहीं हुई. So उसके बाद see this was a flag breakout, this was a flag breakout. अब this is another mega flag breakout, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर आएगा तो खरीद सकते हो इसको. न्यूज इंडिया. न्यूज इंडिया बहुत ही साइडवेज स्टॉक है यार, ये कोई पैटर्न ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. ट्रायंगल टाइप बन रहा है थोड़ा, बट वेरी टाइम पास स्टॉक. आई एम नॉट श्योर इसमें घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए. आफ्कॉन्स. हम्म. लोअर लेवल्स ऑफ आईपीओ पे है ये. if you I'm not sure why would I want to enter it as of now. Do you already hold it, Akshay? Well, is in flag breakout. Hold. No, not an issue. Do part booking, but hold some position. This is a flag breakout. ये eventually ये बीच में थोड़ा correction भी आ सकती है, but कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये सीधा चलता रहे. GSFC. GSFC में I have an alert for 215. So above 215, I will see a good momentum. That is where I would like to enter. NFL. NFL has already started to move. It has given all EMA breakout this past week, but there is an immediate resistance of 112. Which is what? Which is a previous old resistance. Very old, but I'm not sure if it will work or not. But it is there, so it is marked. 112. See, exactly went there and came back. And how old is this resistance? This is from 2007. So all levels work. You just have to see big the chart in big enough time frame. So above 112, the next target is 130, and then it is all-time high. Pakka Limited we discussed already, but I'll see again. Pakka Limited is in this bottom range. You can average it here or enter here. अगर fresh entry लेनी है तो let it give you a breakout of 191. चलो, I think we are done for all the queries. I hope I have not missed much, but काफी देर हो गई, 1.5 घंटा हो गया. So if you guys have any more queries, post कर देना. I'll see over the weekend. Time मिलेगा तो मैं ग्रुप में एनालिसिस डाल दूंगा. ठीक है. तो दिस वाज गुड फन. अगर किसी को कुछ कॉन्सेप्ट पूछना है या डिस्कस करना है, तो ओबीवी वाला तो वीडियो में अभी लिंक दोबारा पोस्ट कर दूंगा, बट आरएसआई विल हैव टू डू आई हैव टू डू सम होमवर्क. आई हैव टू फाइंड द नाइस लुकिंग चार्ट्स जहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस है, टू शो यू गाइस कि अच्छा ये होती है. अभी इमीडिएटली मैं आरएसआई ऐसे बता नहीं सकता कि ऐसे होती है. मेरे को एग्जांपल्स ढूंढ के रखने पड़े. शुभम सर, आप क्यों मजे ले रहे हैं? एनीवे, सो देखते हैं इसको. और कोई क्वेरीज होंगी तो आप ग्रुप में पोस्ट कर देना. ओवर द वीकेंड आई ट्राई टू रिप्लाई इन द ग्रुप इटसेल्फ. अब नेक्स्ट हम करेंगे लाइव स्ट्रीम ऑन थर्सडे अगेन, जिसमें हम उस अगले फ्राइडे की फ्राइडे लिस्ट बनाएंगे. सो सी यू ऑन द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम. बाकी ग्रुप पे तो एक्टिव हैं ही.
Okay then. Bye bye. I'll update the recording on YouTube so जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो देख पाएंगे. All right.